The FSSAI, also known as the Food Safety and Standards Authority of India, has begun collecting samples of spices in powders from all brands, including MDH and Everest from across the country. Now remember, this comes after both Hong Kong and Singapore raised alarm about these two brands, recalling products from these two brands and removing them from store shelves. The Singapore Food Agency had recalled that Everest fish curry masala from its shelves due to the presence of ethynyl oxide, which is a form of pesticide, classified it as a carcinogen. In Hong Kong, the Centre for Food Safety had found the same pesticide. All right, that is, of course, essentially the latest that we're picking up as far as the spices row is concerned. Remember, after Singapore and Hong Kong did raise concerns about this, the FSSAI will take samples of spices and samples from all brands to be collected on that front. But for the moment, this is what we're picking up in terms of the lens on possible use of pesticide. Because remember, ethynyl oxide that was found, which of course then raised alarms, and which is why in Hong Kong and Singapore we did see the respective food industries really talking about that particular quality check, which then raised concerns about what's happening in India with these particular brands. And on that front, this is what we're picking up in terms of both the brands, of course, where cancer-causing spices has been reported, which is why in Singapore what you're looking at is a ban on both these big brands, big spice brands, that is MDH and Everest. In fact, Hong Kong Food Safety Centre had acted against MDH and Everest for the ethynyl oxide presence in spices, and Singapore as well had recalled the Everest product due to pesticides levels. Now remember, both are of course global spice brands. My colleague Bhavna is joining me for the latest. Bhavna, good morning. अगर हम इसके एक्शन के बारे में बात करें, FSSAI जो फूड बॉडी है, उन्होंने इसका कॉग्निसेंस लिया है, उस पे हमें ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरी घटना जो है वो सामने आई है, विदेशों की अगर बात करें तो हांगकांग, सिंगापुर में, जहां पर भारतीय मसाले का इस्तेमाल लंबे वक्त से किया जा रहा था, लेकिन जब ये पाया गया खासतौर पे हांगकांग, सिंगापुर में कि एमडीएच के जो खासतौर पे मसाले हैं, जिस तरह से मद्रास करी हो या फिर सांबर की जो मसाले हैं, उसमें पेस्टिसाइड की जो मात्रा है वो ज्यादा है, एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, जो बॉडी के लिए खतरनाक हो सकती है। ये जानकारी सामने के बाद आने के बाद उसके बाद भारत सरकार सख्त है। फूड कमिश्नर ने जो ये आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जो सैंपल्स है इन कंपनियों के वो कलेक्ट किया जाए और जांच की जाए। जिस तरह से डॉक्टर्स का भी कहना है कि आजकल केमिकल्स का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से कैंसर की जो बीमारी है वो हो सकती है। इसीलिए जब ये पाया गया कि मसालों में इस तरह की समस्या है, तो अब भारत सरकार इस पूरे मामले को लेकर सख्त है और जल्द से जल्द इन कंपनियों के मसाले के सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या इन मसालों में पेस्टिसाइड और एथिलीन ऑक्साइड की जो मात्रा है जिससे बॉडी में खतरा हो सकता है, क्या वाकई ये पाया जाता है, और अगर ऐसा होता है तो सख्त से सख्त भारत सरकार कार्रवाई करेगी। जी Ji Bhavna, thank you very much for putting things into context as to what essentially this also means for the brand after this cognizance that has been taken. But for the moment, we leave it at that. We're shifting our focus